Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is epoxidation. We will discuss today oxidation of carbon-carbon double bond in such a way the product is epoxide and the process is called epoxidation. Outline of our this session include oxidation of carbon-carbon double bond and with special oxidizing agent that is peracid, and we will discuss its experimental conditions, mechanism of reaction, and three different types of named epoxidation reactions. As you know that oxidation is a process, oxidation of carbon-carbon double bond, olefinic double bond is of three types, this one and this one. We will focus on epoxidation only. So at the end of the session, you will be able to recognize oxidizing agent used for epoxidation that are peracids. You will be able to suggest mechanism of epoxidation, and then you can also write this one. Epoxidation is a process of formation of epoxide. ये इसके different definitions हैं. Insertion of oxygen across carbon-carbon double bond result to form a cyclic ether. एक थ्री मेंबर्ड एपॉक्साइड जो है वो बनता है और इसी प्रोसेस को हम एपॉक्सीडेशन कहते हैं. वो डिफरेंट तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं. एपॉक्साइड का दूसरा नाम ऑक्सीरेन भी है. एपॉक्सीडेशन हम नॉर्मली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की मौजूदगी में सिल्वर के साथ उसका रिएक्शन करके भी कर सकते हैं या फिर रिएक्शन ऑफ 2-chloroethanol इन द प्रेजेंस ऑफ बेस से भी एपॉक्साइड बनाया जा सकता है. ये दो मेथड्स हैं जो एपॉक्साइड बनाने के लिए यूज हो सकते हैं. और द थर्ड वन इज द यूज ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो वी विल डिस्कस दिस वन, पर एसिड ऑक्सीडेशन. पर एसिड क्या है? पर एसिड आर मच वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड. इनमें यूजुअल से एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है. They are much weaker acids. लेकिन but these are the carboxylic acid is the byproduct, so buffer solution with sodium bicarbonate is required ताकि pH को मेंटेन रखा जा सके. बाय प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसकी pH लो होती है. पर एसिड्स जो है दे आर इलेक्ट्रोफाइलिक, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जितना इनके साथ अटैच होगा ये उतनी इनकी एफिशिएंसी हाई होगी. एग्जाम्पल है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड. ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू पर बेंजोइक एसिड क्योंकि क्लोरो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन हो तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है. दो कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखें. एक ये कि पर एसिड्स के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का होना अल्कीन्स के साथ रिएक्शंस को, काइनेटिक्स को इनहेंस करता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एपॉक्सीडेशन को डायरेक्ट कर सकती है और इससे हमारा जो एपॉक्साइड है वो अगर एनैंटियोमेरिक एपॉक्साइड है तो हमें स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो मिल सकता है. Now, general reaction of this carbon-carbon double bond when it reacts this carbon-carbon double bond when reacts with this acid. This is per acid, C double bond O OH. General representation for the per acids, and this oxygen is inserted across carbon-carbon double bond. This bond is very weak. It is broken down. Oxygen is inserted across carbon-carbon double bond to give you this epoxide. And the byproduct is carboxylic acid. Similarly, you can say that if you go with the epoxide and then when epoxide is treated with hydronium ion, it is protonated with an acid. It is protonated like this because oxygen has lone pair of electron. It will abstract proton from here. This is protonated form, and then what cleavage take place, ring opening take place, another water molecule will attack over here, this will come here and you will get this one, and then
Upon reaction with the water, it is converted into diol. This type of diol is anti as compared to the previously discussed cis hydroxylation in case of potassium permanganate and osmium tetraoxide. So that is why for anti-hydroxylation, the two OH are on the opposite side of C. So we need to form first epoxide and then hydrolyze it, then react it with the acid. So this is and this is the benefit of this epoxidation. Now the mechanism of epoxidation. Here we have taken this per acid. This is carbon-carbon double bond. Double bond will attack over here and this will comes here, and as electron rich alkene will be more reactive and electron withdrawing group, if it is at here, it will be more reactive. So the per acid will be more reactive if electron withdrawing group is there, and then this type of intermediate is formed. And then what happened, that epoxide is formed and byproduct is formed. So this is um, the process, the mechanism of epoxidation. A specific example is with trans-2-butene when it is treated with meta-chloroperbenzoic acid. This is perbenzoic acid when in the presence of DCM, dichloromethane, it is acting as a solvent. We get 85% trans product. So this shows that this is a chemical reaction, stereochemical outcome. Trans-2-butene will give you this type of product. Trans-2,3-dimethyl oxacyclopropane. This is epoxide, which is obtained by this oxidizing agent. Some of the different types of oxidizing agent you can see on your screen. This is peracetic acid, metachloroperbenzoic acid. This is magnesium monoperthalate. जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट epoxidation वो उसका साइज बढ़ता जाता है, it will be milder and will give you only one type of product. So stereospecificity increase होती है with the increase in size of this acid. Similarly, this is trifluoroacetic acid. This is 2,4,2,4-dinitropurbenzoic acid. This is caro acid. ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एपॉक्साइड बनाता है. पोटेशियम कैरोएट यानी ऑक्सोन, you can use it as an epoxidizing agent. So this is Rain's reagent. So all these are named epoxidizing agents, means per acids, which are used to prepare epoxide. What are the application of per acids? Application क्या है? हम इनको यूज कर सकते हैं अल्कीन से epoxide बनाने में. बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू एस्टर, उसमें भी हम पर एसिड ही यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और हम अगर हेट्रो एटम्स की ऑक्सीडेशन करें जैसे कि एन कंटेनिंग कंपाउंड की टर्शरी कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑक्साइड होता है. जैसे कि अमीन से अमीन ऑक्साइड का बनना, सल्फाइड से सल्फ ऑक्साइड का बनना या सल्फोन का, सिलिनाइड से सिलिन ऑक्साइड का बनना, फोस्फीन से फोस्फीन ऑक्साइड का बनना. तो हम पर एसिड्स को इन डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. कहाँ यूज नहीं कर सकते? अल्कोहल, ईथर, एस्टर, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, they are not oxidized in the presence of per acids. ये नेम्ड epoxidation रिएक्शन है prilzhaeve. prilzhaeve रिएक्शन में हम इस डबल बॉन्ड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जो कि MCPBA के नाम से एब्रीविएट किया जाता है, DCM की मौजूदगी में at 0 degree centigrade. If we are using trans alkene, we get trans product in a very high yield. And the mechanism of reaction is suggested like this because this is very
they are bulky in size and it will come from one side. That is why major product will be that in which its approach is its approach is less with less steric hindrance. So you will get this type of product. This is the cyclic transition state which is suggested, and it gives you this type of product. Jacobson-Katsuki epoxidation. सेकेंड टाइप ऑफ epoxidation नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन है. इसमें हम इस डबल बॉन्ड को epoxidize करते हैं in the presence of sodium NaOCl. In the presence of a catalyst, they have used this catalyst and it gives you specifically one epoxide. They have tried these reaction with different R and AR groups, alkyl and aryl groups, and we have get these types of epoxide. So this is the possible mechanism of Jacobson-Katsuki epoxidation. This is, if it is this double bond, you will get this type of cyclic transition state. And as you know that in this case, there is minimum steric hindrance because methyl is away from this manganese. So that is why you will get 90% this type of enantiomer. So this is also an example of stereospecific of one of the stereoisomer. Enantiomer is formed. So stereoselectively it is formed. So this is due to steric hindrance of the methyl group. This is the minor product. Sharpless asymmetric epoxidation. Sharpless asymmetric epoxidation में allylic alcohol. You use this allylic alcohol as an reactant और isopropoxide as a catalyst यूज किया है. टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैटलिस्ट जो कि डायरेक्ट करता है इसको कि इससे जो एपॉक्साइड बने उसमें जो है ये डायरेक्ट करता है डाइथाइल टार्टरेट की मौजूदगी में कि इससे एक ही किस्म का जो है वो प्रोडक्ट एपॉक्सी अल्कोहल जो है वो बने चूंकि कायरल बनता है. तो शॉर्पलेस एपॉक्सीडेशन एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि स्टीरियोसेलेक्टिवली एलाइलिक अल्कोहल को एपॉक्सी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और इससे हमें जो है ये स्टीरियोसेलेक्टिवली जो है वो प्रोडक्ट मिलता है. इसमें इन दोनों की परसेंटेज होती है लेकिन वेरिएबल होती है. शार्पलेस एपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म आप देख सकते हैं. एपॉक्सी अल्कोहल इससे बनता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की मौजूदगी में और इससे हमारे पास जो है यानी अगर ये ट्रांस आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास ट्रांस बनेगा और अगर सिस यूज कर रही हैं तो ये सिस बनेगा. So you can say that we have discussed epoxidation of carbon-carbon double bond with peracid, suggested some mechanism, and we have discussed some named epoxidation reaction in which the stereochemistry of products is also involved. So this is the end of the reaction.